Hi guys, what's up? How are you guys doing? So I have done a little bit of like brown tone makeup. So I am ready to go out और मैं कहाँ जा रही हूँ? I'm going to वेस्ट साइड. बेसिकली वेस्ट साइड जो मेरे घर के पास में ही है, ज़्यादा दूर नहीं है. तो दे हैव लाइक रेनोवेटेड. मैं एक बार गई थी लाइक फॉर 10 मिनट्स बिकॉज आई जस्ट हैड टू पिक अप समथिंग. तो मुझे देख के बहुत अच्छा लगा. सो आई डिसाइडेड दैट मैं टाइम लेके आऊँगी, एक्सप्लोर करूँगी, जो भी चीज़ें मुझे लेनी होंगी आई विल टेक दैट. अभी फिलहाल के लिए आई एम जस्ट वेटिंग for my driver, not my driver, so my brother. So basically he's getting ready. So once he's ready, he'll take me to that place. और फिर उसको भी कुछ काम है तो he'll go there. He'll just drop me to west side. Situation is quite messy here and here as well. But I'm going to clean this up first. और उसके बाद जो बाकी का रेडी होना बाकी है वो मैं रेडी होंगी और थोड़े बहुत कुछ कुछ काम करूँगी. Meanwhile my brother will also get ready and I will go. गाइस, तो मैं आई हूँ यहाँ पे सबसे बेस्ट फुचका वाला के पास में. सो मैं एक बार यहाँ से लेके गई थी और मेरी मम्मी को बहुत ज़्यादा पसंद आया था. तो मैंने सोचा कि एक बार मम्मी को यहाँ से फुचका खिला देते. उसके बाद हम जाएंगे चाय पीने के लिए बिकॉज हम आए हैं निकले यहाँ पे चाय पीने के लिए. तो चाय पीने हम जाएंगे मुंशी के पास में. बट अभी हम लोग जा रहे हैं फुचका खाने. एंड आई विल शो यू. छोटा सा स्टॉल है बट इट्स रियली गुड, इट्स रियली टेस्टी. सो गाइज, अभी हम आए हैं मुंशी चाय पीने. बट आप यहाँ पे भीड़ देखो. और आज तो होना ही है बिकॉज आज संडे है. तो मुझे लगता है सारे यहीं आ गए हैं. पहले यहाँ पे बैचलर्स लोग आते थे, अभी यहाँ पे फैमिलीज भी आती है. जस्ट लुक एट द क्राउड गाइज. फाइनली आई एम हियर. और अभी अंदर चलते हैं और देखते हैं कैसा है. रिनोवेट हुआ है तो काफ़ी अच्छा लाइटिंग वगैरह दिख रहा है यहाँ से. स्टॉक भी काफ़ी सारा दिख रहा है. सो आई एम सो एक्साइटेड टू सी. लेट्स गो इनसाइड. आई काइंड ऑफ लाइक दिस ड्रेस. मैंने क्वीन ने भी पहना है. Guys, they have some really cool night suits and I kind of like everything, but it's expensive. So I like this one. This is for 1500. It has one shorts. The quality is so soft. This is like the best cotton I've ever felt. Cute. अच्छा लग रहा है बट ये फ्लैट है. कितना क्यूट है ये. गाइज, आई एम इन द होम सेक्शन एंड पहली चीज़ मेरे हाथ में ये बॉटल बहुत अच्छा है. एंड होम सेक्शन में काफ़ी ज़्यादा अच्छा कलेक्शन है विच आई एम गोइंग टू शो यू वन बाय वन. सो लेट्स स्टार्ट. Hey, wow, what a cute. Huh? I'm impressed with the trial room. Just look at this.
honestly, I am in my beige era. Hi guys, so it's the next day and I am back from an engagement event. So my society में एक जन था जिनकी engagement थी, so I am back at home. तो पास में ही था. I had good food there. So now it's the time for some West Side haul. So yesterday I went to West Side. पहले तो मुझे लगा कि मैं खुद ही जाऊंगी, but then my parents decided to join me. So I've got a few stuffs, so I'm gonna show you that. But first, let me tell you about the store. So they have really renovated the stuff very well. The entire store, the collection, everything, and the home section was just bomb. You cannot ignore anything there. आपको सब लेने का मन करेगा. But yes, प्राइस पॉइंट ऑफ व्यू से बोला जाए तो ऑब्वियसली दे हैव इंक्रीज द प्राइस एज वेल, बिकॉज जो चीजें पहले 1000-1500 में मिलती थी अब वो सब चीजें 2000 एंड अबव मिलती है. बट द कलेक्शन इज सो गुड. वेस्ट साइड इज लाइक वन ऑफ माई फेवरेट्स. ऑल्सो कल मेरे साथ एक बहुत ही अजीब चीज हुई है. सो आई वॉज गोइंग क्रेजी अबाउट द कलर बेज. सो एवरी सिंगल थिंग विच वॉज इन द सिमिलर कलर टोन, beige color, I liked everything and I just wanted to take every single thing which was in color beige. So the entire haul is somewhat like a beige color haul. So first thing first, let me start with the first outfit. So this is a shirt that I got. So this is in size medium and I really like this one. मुझे ऐसे ethnic prints वाले shirts काफी पसंद है. इसकी sleeves थोड़े से balloon है but मुझे अच्छा लगा. So I'm gonna pair it with some black maybe jeggings or a jeans or something. Second one is this kurti. ये मुझे देखते ही पसंद आ गया था. This is so nice. इसका fitting बहुत अच्छा है. यहाँ से ये ऐसे laces and the print is also so nice and this was fitting so good on me. I really like this one. So next up I have this off-white top. So this is in satin material and I thought that ये office के लिए काफी अच्छा रहेगा. So I got this. This is in full sleeves and this was looking so pretty on me. So yeah, this is the third option. So I also explored the makeup and beauty section and they have launched quite a good product. Like they have so many lip products like lip oil, lip crayons, lipsticks, lip balms and tons of nail paints. So I also had to get one. So I got this one. This color is so good. It looks so good on your nails and this is really like a formal color. Now one of the section which I really liked and it stole my heart was the night suit section and I had to get 2 night suits from there. So I have this very pretty night suit. This is in color like butter yellow kind of color. It has these shorts and a t-shirt and the other one that I have is this one. So this is really pretty, again satin in material और ये काफी ज़्यादा pretty ऐसे heart बने हुए हैं और ये थोड़ा pink में है. So I like this one. I'm saving this for some special occasion, something like a girls night out or something. Now the last one is my all time favorite which is the footwear section और ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं वहां से कुछ ना लाऊं. So I got 2 things. तो फर्स्टली दिस वन. सो दिस इज अ होम स्लीपर. आई रियली लाइक दिस वन. इसमें जो शिमर मटेरियल है दिस इज लुकिंग सो प्रिटी अलॉन्ग विद दिस ऐसे थोड़ा सा जूटी टेक्सचर है बट दिस इज ऑब्वियसली नॉट जूट. आई एम गोना स्टार्ट यूजिंग दिस मे बी फ्रॉम टुमारो. Now the second footwear is this one. So this is a really pretty ethnic footwear. So I really like this one. Actually ये mom का है but मेरा और mom का size बिल्कुल same है तो मैंने सोचा कि we can alternately use it. और ये काफी pretty है. इसका color जो है थोड़ा सा golden and silver mix में है. So I really like this one. I cannot wait to pair this one with some beautiful outfit. Now the last one was the home decor section which was really amazing and pretty but मैं उतना ज़्यादा explore नहीं कर पाई because the store was getting closed, billing was getting closed और हम बहुत ज़्यादा late हो गए थे वहाँ पर. So I did not explore it much but it was expensive. Every single thing was expensive and it did not make sense to me कि मैं उसको अभी लेकर आऊँ. Of course I might get something from that section जब मेरा मन करेगा बहुत ज़्यादा तब but not for today. So yeah, this was everything that I got from West Side yesterday.
I liked everything that I got, and now it's your turn to tell me which one is your favorite. So this one is a friendly reminder to all your girlies that you don't need to seek external validation about what you want to do and what you want to wear. You need to be confident to wear anything and everything. And in case if you don't know about things like what to wear, where to go, how to pair, how to style, you better do your research and then find out a way. You don't have to believe in other people, you don't have to believe in your friends, your family, nobody. You yourself is your validation. और आपको खुद से खुद डिसाइड करना है कि आपको क्या करना चाहिए. And don't wait for anyone else to come and push you on these things. Wear clothes that makes you powerful and not the ones which is trendy but uncomfortable or something which is expected by others. Your outfit should make you smile a little wider. So your outfit, your rules, your style. Okay guys, now that the haul is over, I'm gonna show you something really interesting which I wanted from a very long time and finally I got delivered like a little while ago. So मैं आपको दिखाने वाली हूँ. First, let's change the outfit that I'm wearing now and let's wear something more comfortable, something like PJs, and then I'll see you later. So guys, I got something and which is this. So this is from Agaro. So this is basically a milk frother, a coffee frother. I always wanted that cafe wala coffee at home और इसलिए मुझे बहुत टाइम से ये चाहिए था. Agaro is the brand which I really trust. मेरे पास काफ़ी सारे इसके और भी appliances है जो मैं use करती हूँ which is really good. तो इसलिए मैंने ये order किया है and I'll open this and show you guys. So now I'm gonna make my coffee with this and I'll show you how it looks. Guys, just look at this. Just look at this. It is so awesome, so beautiful. इतना मस्त बन गया है. I've made this cold coffee in almond milk. Love it. Perfect coffee.